अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक। और मीट एंड टॉक में आपको ऑलरेडी पता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे सरप्राइजेस लेके आते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं वो सरप्राइज ही होता है जब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करने जाते हैं जिनकी आप स्टूडेंट भी हो या उनके साथ आपने काम किया हो या यू विश टू वर्क विद देम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा खास किया होता है जिसकी बिना पर हमारा दिल करता है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनसे उनके जस्ट लाइक किए हुए कामों पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम अपना रोड मैप बना सकें। तो आज हमारे साथ जो एक इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी मौजूद है, वो मेरे लिए बड़ा इसलिए सरप्राइज है कि जब मेरी उनसे इंसिडेंटली मुलाकात हुई तो मुझे आइडिया नहीं था कि वी यूज्ड टू बैचमेट्स। तो जब हमारी बात हुई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उनके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि आपने मुझे पहचाना। तो लिटरली आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा सर, मुझे ये लग रहा है कि मेरी आपसे पहली मुलाकात हो रही है। तो उन्होंने मुझे पहले एक इशारे में कहा कि सोचो अगर मेरी दाढ़ी ना होती, मेरे सर पे केप होती तो मैं कैसा दिखता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोशिश करूँ रिकॉग्नाइज करने की। फिर उन्होंने कहा मेरी स्माइल पे गौर करो। तो मैंने कहा आपकी स्माइल से तो लगता है कि आप देखे देखे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी समवट और डिस्कशन हुई तो पता चला कि सर मेरे साथ पढ़ भी चुके हैं। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान से बाहर जाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो मैं उनकी बदबानी आपको सुनवाऊंगा उनका रहा। और उन्होंने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो पीएचडी स्कॉलर हैं इस वक्त, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, मेरे मेंटोर भी हैं और मेरे टीचर भी रह चुके हैं, और ऑब्वियसली रह क्या चुके हैं, वो हमारे टीचर हैं। तो सर उबैदुल्लाह खोसो साहब आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू सो मच अतीक, आपने बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया। And yes, we used to be classmates, not the batchmates. I must correct that. My name is, as Atik mentioned, UBEDULLAH KHOSO, and I did my PhD from France, from Aix Marseille University, in marketing, and my area was advertising and consumer behavior. And अच्छा, इसके अलावा मैंने MBA SZABIST से ही किया हुआ है, where me and Atik used to be the class fellows. And it was a really good experience back then when I did my MBA from here, and I learned a lot of things from SZABIST, and that I carried for the rest of my life with me. So that was a really good experience over here. Alhamdulillah. Sir, I believe like you are an inspiration. Sir, I believe you are like an inspiration for the people of especially Sindh. ऐसा नो हमारी बातें होती हैं तो हम अक्सर अपने आबाई शहर सखर की बातें भी बहुत सारी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर भी आए, लेकिन आप बाहर फ्रांस भी गए, सारी चीज़ें। मगर मैं ये चाहूँगा कि आप आज के इस प्रोग्राम में लोगों को बताएं कि आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई, किस स्कूल में पढ़े। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई मैं तो पीले स्कूल का पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्राउड है कि मैं पीले स्कूल में पढ़ता था। एक बेंच पे बैठता था जिसमें जस्ट लाइक हॉर्स राइडिंग टाइप हम बैठते थे बेंच पे, और हम तख्तियाँ भी लिखते थे। बहुत काम किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इब्तिदाई तालीम और मैट्रिक कहाँ से किया और इंटर कहाँ से किया, ये आज आप हमें बज़बानी बताएं। ज़रूर बताऊँगा। एक्चुअली लाइक यू, मेरी जो एजुकेशन है वो भी पीले स्कूल वाली ही है। Pila School, let me explain to our audience what is Pila School. That's a government school. We used to wear the yellow dress, dark yellow dress at that time, right? मेरी जो इब्तदाई तालीम है that is from government primary school, पुराना सखर, ओल्ड सखर प्राइमरी मैन स्कूल। एंड मेरी जो मैट्रिक तक है that is from government boys high school, municipal boys high school, old सखर again. And मेरी जो intermediate है that is from Islamia College Sakhar. So throughout my journey from first and basic class to my intermediate is the Pila School and the Pila College, and then I did my BBA from Sakhar IBA, and then I came here and did my MBA from SZABIST. So, sir, बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही जस्ट लाइक वाइटल सा सब्जेक्ट है, और सखर अपने आप में माना जाता है कि पाकिस्तान का कारोबारी बहुत बड़ा शहर है। तो क्या बचपन से ही, स्कूलिंग के टाइम से ही आपको ख्याल था कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है, या स्कूल के बाद आप जब कॉलेज में आए तब आया ख्याल, या आपने जब इंटर भी कर लिया उसके बाद दोस्तों यारों के साथ बैठे, कोई ऑप्शन नहीं था तो आपने कहा बीबीए वगैरह करते हैं? क्या ये इंसिडेंट कैसे हुआ बिजनेस मैनेजमेंट का? ये जो इंसिडेंट था, indeed you put a really right word for that, that is incident. Yeah, that was actually accident, I must say, because everything that I did was accidental, and Allah subhanahu wa ta'ala created the
a destination for me, and he knows better than me. I didn't thought about having that kind of education. So jab I was in matriculation, my father used to tell me, he was a teacher also, तो उनके जहन में यही होता था कि either you should become a doctor or you should go for a commission CSS. तो बचपन से मेरे वालिद साहब खैर यही गाइड करते थे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है. तो like every student, I didn't have any direction in my early childhood. My father was the only direction, and he also has some limitations of the scope. He didn't know the scope of the things around the world. So he guided me, these are the only options that you should add up. I said, okay, perfect, no issues. So I actually did pre-medical, and एक टेस्ट भी दी थी मेडिकल की जिसमें हम फेल हो गए थे due to my bad grades in intermediate. I didn't have the good grades at that time. तो I was worried what to do. फिर काफ़ी दोस्त हमारे जैसे जो है इम्प्रूव करते हैं, तो हमें कहा गया कि इम्प्रूव करें. मैंने कहा I don't want to waste my time. तो I actually came here at IBA Karachi. I gave the test, and I gave the test at IBA Sakhar. Alhamdulillah, I passed both the tests, and at that time the situation in Karachi was worse, and target killing was at peak. So my father said, no, you shouldn't go to Karachi, so you should start from here. I said, okay, perfect, no worries. So I gave him option. My father went to IBA Sakhar, and he knew that IBA Sakhar is a good place for education. So इन्होंने कहा कि okay, just start your education like that. और मैंने कहा ठीक है. So meanwhile मैंने 2-3 और कोर्सेज भी कर लिए थे. जितना टाइम मुझे मिला था मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज किए, थोड़ी सी अंग्रेजी सुधारी, because I was from Pila school and we didn't know much of the अंग्रेजी at that time. So I tried to improve it from that particular area. Yeah. So your early age, you were supposed to be just like dreaming about the MBBS doctor. I never dreamed of anything, but I said, okay, whatever my father says. He's an experienced person, so I said, okay, he must be the right person to tell me this thing. So I didn't think about anything at that time. Maybe if you ask me my personal thing कि मुझे क्या करना है, I'll be honest, and that sounds funny, but I wanted to open my own shop. I wanted to have maybe the electrician shop or the shoes shop, because my brothers used to work there, and I found that it's really a lucrative thing, so I should do that. Even somewhat after you were early, just like an entrepreneur, you were supposed to start your own business. Yeah. Like you were entrepreneur, and then again, it's inclining to the business management. Yeah. Yeah. Moreover, as we are going further, so scholarship बहुत ही interesting topic होता है, हर student चाहता है. तो आपने अंडर ग्रेजुएशन में कोई स्कॉलरशिप अचीव की, या आपने मतलब अपने फीस वगैरह देके सारा कुछ प्रोसेस करके पढ़े, क्या हुआ? That's a really good question, by the way, and I will talk about that indeed. It's really helpful for my students, my fellows, and for the students who cannot afford the education. So पहली चीज़ जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि we cannot afford university education, it's totally wrong. There are multiple options you can add on. मैं जब अपनी BBA कर रहा था, I was doing BBA from Sakhar IBA, तो at that time the semester fee was nearly 42,000 rupees. Okay, and my father's earning were nearly like 35,000 or 40,000. So that was the monthly earning of my father. So he couldn't afford that, of course. लेकिन उन्होंने कहीं से पैसे जोड़कर जो है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे कर दी थी, because he knew there are options in IBA. So there were like 3 or 4 type of scholarships at IBA at that time. So one was the Sindh Endowment Fund, and Sindh Endowment Fund I believe is really good scholarship you should look for, and आपने इसकी date वगैरह announce होती है, and it's based on not only merit but based on the need. Yes. So it is really good scholarship. उसके बाद USAID की scholarships आती हैं, but I got Sindh Endowment Fund, and Alhamdulillah throughout my BBA the Sindh government paid the fees for me. अच्छा, उसके बाद then I came here for MBA. तो MBA में यहाँ पर again we believe कि SZABIST is a private institution, and that's beyond our budget, so we don't try for that, right? Some people do that. So I found 2 scholarship here. I got 2 scholarship here at SZABIST. First was based on merit, that was 50% off in my fees. And the second was again the Sindh Endowment Fund. तो मेरी सारी फीस जो है reimburse हो गई जो मैंने पहले पे की थी, and alhamdulillah I got the money. उसके बाद alhamdulillah I got the scholarship for PhD too. I went to France
and it's really easy. We think yeah, going foreign is a really big thing. No, it's easy. The first step is little tricky. That is, you have to pass the test. आप चाह रहे हैं कि भाई आपने पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें अचीव कर ली हैं, आपने अंडर ग्रेजुएशन के अंदर स्कॉलरशिप ली है और आप अपना करियर परसू करना चाह रहे हैं और पीएचडी करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रांस जाना चाह रहे हैं, तो सर अब हम चाहेंगे कि आप पूरी डिटेल में हमें आपका पहला स्टेप, आपने कहाँ से क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरा, कैसे किया, क्या हुआ, किस कदर हुआ, वो सारी स्टोरी आप आज हमें बताएं। ओके, तो आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड और उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ये टेस्ट का एक HEC की टेस्ट होती है, HAT, HEC एप्टीट्यूड टेस्ट, तो दैट वाज न्यू एट दैट टाइम। माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यार आप इसमें टेस्ट में फॉर्म फिल करवाएं, मैं भी फिल करवा रहा हूँ। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग समवेयर। मैंने कहा यार आई थिंक आई वोंट पास द टेस्ट, सो इट्स यूजलेस थिंग टू डू दैट। तो उसने कहा यार ट्राई तो करें, यू नो दे आर रियली गुड एंजल्स इन योर लाइफ, जो इस तरीके के फरिश्ते आ जाते हैं जो आपको कहते हैं कि यार ट्राई करें, क्या होगा। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। तो लाइक 2-3 माह के बाद टेस्ट थी वो। तो आई वॉज हियर in Karachi. I was working in a really good organization. I was in Qatar Petrochemicals as a marketing coordinator for Pakistan. So at that time, I was like enjoying my luxuries of life. So I didn't need any scholarship. I don't want to go anywhere. So I was having a good money here. तो लेकिन उस टाइम मेरे दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारी टेस्ट है आज, संडे का दिन है, चले जाओ टेस्ट देकर। मैंने कहा यार दिल नहीं कर रहा। अच्छा, फिर मैं सो गया। आई डिडंट गो फॉर द टेस्ट। फिर मैंने लेटर खोला, उसमें लिखा हुआ था नेक्स्ट संडे के लिए, मतलब दैट वाज नॉट द संडे दैट आई यूज्ड टू गो, राइट? या 1 वीक मोर। मैंने कहा यार चलें देख लेंगे। फिर नेक्स्ट संडे आया और आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज। तो सारी रात आई वाज लाइक 4-5 मूवीज में देख चुका था और मैं बस सुबह के टाइम बिल्कुल ही मूड नहीं था। फिर मेरे कज़न की फ़ोन आई मुझे, यार मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो क्या आप टेस्ट पे चलेंगे? मैंने कहा यार तुम जा रहे हो? हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी जाता हूँ। तो आई वेंट देयर फॉर टेस्ट and कुछ अर्से के बाद I saw the result. Alhamdulillah, I passed the test. I said okay, that was something really surprising, yeah. And then Alhamdulillah, I passed the test, and in fact I got the option of multiple countries, not only one country. You know, HEC की एक scholarship थी उस वक्त, that was HEC overseas scholarship. मेरा ख्याल अभी भी वो अनाउंस करते हैं। तो उसमें I have like it was open, there were like 15 countries, I think 15 or 20 countries, जिसमें मेरे पास फ्रांस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, and मेरे पास I guess हंगरी था। There were a few other countries, I forgot the name, I'm sorry, I don't recall them. लेकिन मैंने कोशिश की कि I should go for Australia or Germany. I didn't think about the France. जैसा कि मैंने कहा everything is accidental, you know. तो yeah, तो मैंने आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में आइल्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स हैव सम प्रिपरेशन अबाउट द आइल्स। मीनवाइल मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि स्कॉलरशिप मेरे हाथों में से निकल जाए, बिकॉज आई वांट दैट स्कॉलरशिप। तो मीनवाइल मैंने अपने प्रपोजल पे काम किया, रिसर्च प्रपोजल में, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ नेसेसरी थिंग, राइट? सो ऑल दोज हु वांट टू गो आउटसाइड फॉर PhD, यू मस्ट हैव अ रियली गुड रिसर्च प्रपोजल। और इसमें थोड़ा सा चले मैं बीच में थोड़ा सा गाइड भी करता चलूँ कि अगर आप PhD परसू करना चाहते हैं तो गो एंड सी द प्रोफाइल्स ऑफ द प्रोफेसर्स, जिसमें आपको पता पड़े कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से कौन सा प्रोफेसर मैच करता है, राइट? अच्छा, उसमें ये होगा कि यू कैन डेवलप योर प्रपोजल अकॉर्डिंगली, राइट? दैट्स अ परफेक्ट थिंग टू डू। तो उसके बाद अप्रोच देम पर्सनली, ईमेल करें उन्हें in order to get the acceptance. Once you pass the test, second step is to get the acceptance from the research supervisors. ठीक है? तो मेरे कुछ दोस्त थे फ्रांस में, उन्होंने कहा कि यार वी आर एट दिस यूनिवर्सिटी एंड दे आर रियली गुड प्रोफेसर्स हियर, सो यू शुड ट्राई हियर। मैंने कहा चलें ठीक है, मीनवाइल आई शुड बी सेफ। तो मैंने अप्लाई कर दिया और 2-3 जगह पे मैंने प्रपोजल भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह से मुझे आ गई एक्सेप्टेंस। अच्छा, मीनवाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं अपनी आइल्स की प्रिपरेशन भी कर रहा था, एंड जर्मनी में भी मैंने अप्लाई किया हुआ था उसी टाइम। तो HEC का असूल होता है कि अगर आपकी कहीं से फर्स्ट एक्सेप्टेंस आ गई तो यू हैव टू गो देयर, यू नो। सो आई गॉट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम फ्रांस and fortunately I had to go to France, and alhamdulillah I'm thankful to Allah because everything that Allah planned was great, you know. So I went to France, and meanwhile I got the acceptance from Germany and Australia too. So at that time I had like decision to make, yeah, what should I do, you know. It's just always Allah subhanahu wa ta'ala always so grateful कि
एक चीज हाथ में नहीं देते, 3-4 चीजें इकट्ठी दे देते। नाउ इट बिकम्स कंफ्यूजिंग फॉर यू कि यार कौन सी उठाओगे, तुम्हारी मर्जी है। ही इज क्वाइट जनरस, indeed he is a generous, most generous. So at that time, as I said, I actually selected France at that time. So alhamdulillah, I went to France, and again it was a really amazing journey in France. I enjoyed that. सही सर। अच्छा, फ्रांस पहुंचे, किस तरह स्टार्ट हुआ प्रोसेस? देन अगेन ऑब्वियसली अकोमोडेशंस के इश्यूज होते हैं, फूड के इश्यूज होते हैं, और नॉन मुस्लिम कंट्री है, लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली आप जब इस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे तो और हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगी। मैं चाहूँगा कि वहाँ का सफ़र, जैसे कितने कोर्सेज पढ़ने पड़े, एडवाइजर्स के साथ किस तरह चलना पड़ा, एंड देन अगेन वहाँ रहने के लिए क्या क्या था, किसका दर था। ऑब्वियसली वहाँ पर मैंने सुना क्योंकि ऑब्वियसली मैं गया नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसके बाद ब्रेक होता है। तो इस पे थोड़ा हमें बताएं, इस लाइफ स्टाइल के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं जब गया फ्रांस तो आई वेंट टू पेरिस एट दैट टाइम, और पेरिस से मुझे जाना था एक दूसरी जगह साउथ ऑफ फ्रांस। मेरी जो मेन यूनिवर्सिटी दैट वाज एक्चुअली इन एक्सन प्रोवेंस इंग्लिश में कहते हैं उसे। तो वहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा अराइवल जो था वो पेरिस में था। एंड वो पेरिस से इतना दूर है, जैसे आसान अल्फाज में कहूँ शक्कर से कराची दूर है। सो इतना डिस्टेंस है वहाँ से, लेकिन वहाँ पर ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं, तो इट टेक्स लाइक 3 to 4 hours, दैट्स इट। अच्छा, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सबसे बड़ा इशू वहाँ पर जो मुझे इमीडिएटली फेस हुआ, दैट वाज लैंग्वेज। यू नो, आई वाज यूज्ड टू इंग्लिश, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन फ्रांस डोंट स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक फ्रेंच, and I didn't know anything about French. You know, French में मुझे सिर्फ आता था bonjour, that's it. I didn't speak that time. Yeah, that was I learned from YouTube, and it was really hard for me to pronounce that word even. You know, I was saying bonjour, so that's something really annoying. So okay, so वहाँ पर then I showed my ticket there, and alhamdulillah I found really amazing friends over there. They guided me everything, and it's really easy. You will find really good friends everywhere. You know, it's if you are a good person, or even if you are not a good person, you know, you will find good people. So you will find really amazing people. तो उन्होंने मुझे step by step हर चीज़ guide की, and it was really a smooth thing. It was not like something really hard for me. Though there were a few cultural shocks in France. You know, I was from here, and from Karachi and Sakkar, you know, we have different kind of mindset. And when you arrive directly to, that was the first country that I visited. You know, I didn't go to Saudi Arabia, I didn't go to Dubai, I didn't go any other country. And first country that I visited was France. So it was a totally different thing for me. I got the cultural shock. I was a little shy, worried about a lot of things. Lekin when I reached there, and there was a community of Pakistani students and the Pakistanis too who were living there. So उन्होंने बहुत हेल्प की काफ़ी जगह पे मुझे। एंड कल्चरल शॉक एक पॉजिटिव सेंस में भी मुझे बहुत मिला वहाँ पर। वो ये था कि जैसे ही मैं वहाँ गया, साउथ ऑफ फ्रांस इज़ रियली अमेजिंग। फ्रांस मतलब आई लाइक पेरिस बट इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल। साउथ ऑफ फ्रांस इज़ अमेजिंग, यू नो। तो इवन पीपल आर अमेजिंग ओवर देयर, दे आर नॉट लाइक एरोगेंट, दे आर रियली अमेजिंग पीपल। तो जैसे ही मैं गया तो वहाँ थोड़ी बहुत दोस्तों ने मुझे फ्रेंच भी सिखाई। तो जब भी हम बस में सफ़र करते थे या सामने कोई बंदा गुजरता था तो वो ये कहता था bonjour, bonsoir, मतलब इट मीन्स के गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और गुड डे। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ही डजंट नो मी और शी डजंट नो मी बट ही इज सेइंग सलाम टू मी, दैट वाज देयर सलाम, यू नो। एंड जब भी हम बस से उतरते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब भी उतरते थे या कहीं किसी जगह से हम निकलते थे तो उनका एक होता था merci au revoir, which means thank you and goodbye, you know. That was something, yeah, greetings, you know. So I was amazed that people even didn't know me. I was greeted by them. I said okay. So I was told, even I watched a lot of movies about the French people that they are arrogant, but I didn't find them arrogant. They were really amazing people. I have really good friends in France. Still we talk, still we have really long conversation, maybe 2 hours, and my wife says please बंद करो या उधर चले जाओ, you know. So that was my journey. Food और accommodation के हवाले से देखें, if you are PhD scholar from HEC, accommodation is quite easy. You know, Campus France is an institution in France which is connected with HEC Pakistan, so they organize everything for you. वो आपकी रेलवे स्टेशन से लेकर आपकी अकोमोडेशन तक टिकट भी दे देते हैं।
सही। और प्लस आपकी अकोमोडेशन के हवाले से वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी होती है। यू जस्ट नीड टू गो देयर एंड आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करते हैं, वहीं पर जाके ऑन द स्पॉट वो आपको अकोमोडेशन दे देते हैं। सो इट्स क्वाइट ईजियर। कुकिंग के हवाले से yes, there were a lot of issues. Initially I didn't consider them issues, then I realized okay, there's something big I have to consider. And halal food के हवाले से there were a few issues के आप हर रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, you know, because they cook a lot of not halal things. तो we had really selected this restaurant. Even हम McDonald's पे भी जाते थे तो फिश बर्गर खाते थे. We couldn't have the luxury to enjoy the chicken burger over there. So that was something. लेकिन फ्रांस इज़ मेरा ख्याल है कि फ्रांस में जो है मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है. वहाँ पर ट्यूनीसियन है, अल्जेरियन है, टर्क्स हैं और उसके अलावा आपके मोरक्कन्स हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ Muslims in France, और इसी वजह से वहाँ पर बुचरीज, हलाल बुचरीज बहुत ज़्यादा हैं. You can enjoy different kind of meat over there. So you will find the halal food over there. And the thing that you need is your cooking skills. You know, you have to cook it for yourself. So we learned cooking over there too. So that was amazing. So halal food was issue, but you have to cook it yourself. Initially आपके friends वहाँ पर help करते हैं. First week was like amazing. मेरे first week was I was a guest for everyone over there, and then everyone was my guest after that. यार अब तुमने हमें खिलाना है. So you know, yes, it was a reciprocity. So I have to give them back that thing. You know. So viewers, अब आपको काफी सारी चीजों का आइडिया हो चुका होगा, मगर अगले ब्रेक में आपको और ज्यादा आइडिया होने जा रहा है कि पाकिस्तान और फ्रांस के अंदर पढ़ने के बाद रिसर्च में क्या क्या हो सकता है, किस कदर हो सकता है. स्पेशली मैं ये कहूंगा कि फ्रांस, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं मैं चाहूंगा उनसे सीखना, मगर इस वक्त टाइम है इस चीज का कि हम सर से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें. सर, पाकिस्तान में हमने MBA साथ में किया, हमने भी यहाँ पर रिसर्च की, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बहुत सी चीजों से हमारे यहाँ पर नॉलेज मिली, जो बेसिक नॉलेज थी भी. तो मैं ये चाहूंगा कि हम बात करते हैं ना, जब कल्चर की, किसी भी चीज का कल्चर डेवलप किया जाता है, तो यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर, रिसर्च के बारे आप हमें बताएं, और वहाँ पर रिसर्च को लेकर लोग कितने सीरियस होते हैं, किस कदर होते हैं, और वहाँ की रिसर्च और यहाँ की रिसर्च को आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडीज के हवाले से हम बताएं. ओके, सो इनिशियली एज यू सेड कि हम यहाँ पर थे तो वी लर्न समथिंग अबाउट रिसर्च, एंड अल्हम्दुलिल्लाह I got really good teachers here in SZABIST. They were really amazing teacher, and I learned a lot of things from him. He was my supervisor in my previous university too, and he was really amazing teacher. I'm talking about Dr. Mohammad Zaki Rashdi. He's really amazing teacher, and I learned a lot of things from him. And the things that I learned from him actually helped me in France too. So we were really good in research there just because of this, and I always give credit to him, because whatever research I knew was just because of him, and the research proposal that he suggested was the research proposal that was accepted over there. So wow, that's just because of him. So I admire him. So he was a teacher here, so we learned a lot of things from here. And जब वहाँ गए तो research में there is a difference. Indeed there is a difference. हम यहाँ पर research करते हैं just most of the time, unfortunately, just to fill quantity. You know, we do not focus on the quality. What do I mean by the quality is the impact of research on the society, what you're trying to actually portray. Is there any application of your research or not, you know? And unfortunately, I don't see such things here. We work on research, we know the techniques, we know the methodologies. Unfortunately, we do not utilize them in a good way. So I learned that even they didn't have that much of a strong methodology, though they had, but if we are comparing with us, so their research was more impactful. That's what I found. They were more concerned about the well-being. They were more concerned about the practicality of the research rather than just creating the models. And but I think we didn't find such things here. You know, we make the models, we make the best models, but we don't see their applications, unfortunately. So I feel that's a gap. You know, and the new scholars, new researchers can fulfill that gap. कि आपने कुछ ऐसी research करनी है जिसमें आप कोई सोसाइटी में एक impact लेकर आए. अभी भी अगर आप
चले जाएं टॉप जर्नल्स में, जो फॉर इंस्टेंस इन माय केस अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो जर्नल ऑफ मार्केटिंग की बात करें, या जर्नल ऑफ इंटरएक्टिव मार्केटिंग की बात करें, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करें, ये दीज आर जर्नल ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करें, सो दीज आर द टॉप जर्नल्स. I forgot about the Journal of Consumer Research this year. So they are amazing research journals. अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो you will find कि यार there is some application in that. You know, they actually utilize all the energies into that research paper. इस वक्त जो internationally काम हो रहा है, for instance we are working internationally. There are multiple things. For instance, VR पे बहुत काम हो रहा है, AI पे बहुत काम हो रहा है, interactive marketing पे बहुत काम हो रहा है, and we do not know about interactive marketing. Neural पे बहुत काम हो रहा है, neurochemistry marketing में चल रही है, and we don't know about the neurochemistry of marketing. Indeed. You know? Indeed. We actually are not even aware of the term. इन मार्केटिंग की केमिस्ट्री और न्यूरोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है हमारी. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम बात कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि कंप्यूटिंग साइंसेस का टॉपिक ये तो that's something like really important, and we are quite ahead. I'm working on some research topics, but I keep them for another podcast. I will discuss about those things. But I wanted one thing from you कि आप हमें टाइम देंगे और हमारे साथ ये जितनी भी टॉपिक्स हमने डिस्कस की हैं अभी भी उसको हम थोरोली डिस्कस करें. आप हमारे साथ एक पॉडकास्ट नहीं मगर सीरीज हम उसकी स्टार्ट करें. आप हमें टाइम दें प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि हम इस चीज़ों को उनके साथ डिस्कस कर सकेंगे, उनकी नॉलेज एनहांस हो. सो मैं चाहूँगा कि आप लाइव कैमरा के आगे इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे, आप हमें टाइम देंगे. इंशाल्लाह. अच्छा सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त घूम रहा है, मैं चाहूंगा कि आपसे करूं. अभी आपको एक ग्रांट मिली, मैं चाहूंगा आप उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड डेवलप हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना प्रपोजल भी जमा करवाया, सब कुछ हुआ, किस तरह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्या कुछ अचीव किया, हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे. ओके, चलें, आपने सवाल पूछ लिया तो आपको बता देते हैं. इट वाज NRPU रिसर्च ग्रांट, एंड अगेन आई विल थैंक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला who actually gave me the success. I don't deserve that success. It's all because of him. That was I won that research grant of 5 million, and that is NRPU research grant. It is actually a grant given by HEC to the national universities of Pakistan, and they want us to have some impactful research for the society, and it's really amazing grant. And what I think, if you apply for that research grant, you can actually pay back to the society, keeping the money thing aside. You are earning from that, right? And it's not that much. It's like something which is like for just giving you the motivation, but that is something which you are giving back to the society. For instance, my research project is actually based on the public service messages. Okay, and we know I'm really concerned about the public service messages because my youth, I see, I am also young, I'm not that old, you know, but I see my students, I see my children, I see my brothers and sisters, everyone, they have a lot of issues, you know, and we can change those issues through the public service messages. Government of Pakistan spends a lot of money on the public service messages. For instance, you just dial any number and you will hear the public service message, right? So my idea of research at that time was, are they effective? Are they able to change the behavior of the people? Because you know, the basic idea for that public services message should be the persuasion, you know, and persuasion is the art of changing someone's attitude towards something. Indeed. Right? So if, let's suppose my students, my children are smoking or they are doing some bad stuff, and if they are not changing their behavior just because of their public service message, so that's not effective in public service message. Very true. Maybe there are some issues with that public service message, and because my previous research is based on advertising, and I specifically studied the effectiveness of advertising. कि कौन सी advertising effective हो सकती है, considering socio-cultural and plus psychological dynamics of our country and France. So I have that specific model and the specific constructs, I must say, जिसके जरिए मैं इसको study कर सकता हूँ कि okay, this is not effective because of this, and we should make it effective using these things in our public service messages. You know, public service message is a type of advertisement. You know, it itself is advertisement. Right. Okay. लेकिन उस advertisement में हमारा objective is not to earn the money. Our objective is to have some
good and useful impact on the society, right? And if they are not achieving that objective, so our government is spending money and it's just wasting that money, right? So my idea was to minimize that wastage and consider it as we call investment for our youth, so that they can change their behavior. So considering social media, the public service messages, and considering these public service messages of West and other parts of the world, so there are certain models that we can implement here in Pakistan. So that was my idea, but I'm working on it, inshallah. अच्छा सर, इसके अलावा हम इंशाल्लाह जो आपके साथ इन फ्यूचर पॉडकास्ट करने जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ एक स्पेशल एपिसोड हो कि इसके ऊपर किस तरह प्रपोजल लिखा जाता है, क्या किया जाता है, किस कदर होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और क्या क्या इसके अंदर जो है जैसे लाइक इम्पैक्टफुल चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक मॉडल्स किस तरह बनाए जाएंगे। तो ये तो होगी इंशाल्लाह फ्यूचर की बात। इस वक्त मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश की जो लोग पाकिस्तान या दुनिया भर में हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या आपकी तरफ से सजेशंस होंगी, बट स्पेशली फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान? Okay, so this is for world. You know, the world is going through some crisis, and especially the youth is going through some crisis, and these crises are related to the identity. You know, ये कल हमारे एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर का दिन गुजरा है, अल्लामा इकबाल का. Yes. And he was the person who emphasized on the identity crisis पे उन्होंने बात की थी. उन्होंने एक हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात की थी. सेल्फ कॉन्सेप्ट इज योर आइडेंटिटी, योर डेफिनेशन अबाउट योरसेल्फ, यू नो. और इसी तरीके से वेस्ट में जो बंदा गुजरा था, इसी एक टक्कर का मैं कहूँ तो दैट वाज फ्रेडरिक नीचे, और नीचे उसे कहा जाता है. उसने एग्जिस्टेंशनलिज्म पे, इट्स अ रियली हार्ड वर्ड टू प्रोनाउंस, यू नो, समटाइम्स आई मिस द वर्ड. सो उन्होंने भी उस पे ही काम किया था, एक आइडेंटिटी क्राइसिस पे. लेकिन इस मौजूदा दौर में हम बहुत ही ज्यादा शिकार हैं इन आइडेंटिटी क्राइसिस के, स्पेशली आवर यूथ. और उसका रीजन है, काफी रीजन है. सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पेरेंट्स, यू नो, हम बचपन से अपने बच्चे को उसकी अपनी आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं करने देते. हम बचपन से बच्चे को कहते हैं कि यार वो देखो तुम्हारा कजन कैसे कर रहा है, वो देखो तुम्हारा भाई कैसे कर रहा है, वो देखो मेरे फादर का या मेरा जो फ्रेंड है उसका बेटा कैसे कर रहा है. तो सो we start trying comparing our children since the very beginning. 3 साल के बच्चे के ऊपर हम इतना बोझ डाल देते हैं कि मैं उतने डंबल्स नहीं उठा सकता जितने बच्चा जो बैग्स उठाता है, राइट? ऐसा ही है. So हम उसी वक्त जो है ना, उसको एक वो मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी, राइट? बिल्कुल. वो मैट्रिक्स में एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम पूरी दुनिया को चलाता है और उसको बिल्कुल कंजेस्टेड रखता है. इसी तरीके से हम अपने बच्चे को उस सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं और उसकी आइडेंटिटी को वहां पर ही निचोड़ देते हैं. We don't know the impact of that system. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा ग्रो करता है तो बचपन से ही उसको आदत पड़ जाती है कंपैरिजन की. ठीक है. हर स्टेज पे वो कंपेयर करना शुरू कर देता है. ओके, तो he is doing that, I will do that. तो अपनी आइडेंटिटी वो कंपैरिजन के बेसिस पे अडॉप्ट कर लेता है, राइट? अच्छा, ये फिर आगे चल के अब जब आज जो दौर चल रहा है हमारा, दैट इज ऑफ सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें चल रही हैं, राइट? तो अब जो हम अपनी आइडेंटिटी है वो उन चीजों में ढूंढना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी थिंक दे आर गुड अचीवर्स, दैट ग्लैमर इज रियली अमेजिंग थिंग. ओके, वी फॉरगेट दैट उस ग्लैमर में वो कर क्या रहे हैं. वी फॉरगेट अबाउट दैट थिंग. दे आर टेकिंग ड्रग्स, दे आर टेकिंग कोकेन, एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर ग्लैमर काइंड ऑफ अ माइंडसेट. बट वी थिंक दे आर टेकिंग इट, they are good achievers, they are good earners, why not we? And we feel that that's a really good identity. Unfortunately हम वो चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम को करप्ट कर रही हैं. सिस्टम मीन्स हमारे माइंड को करप्ट कर रही हैं. और जब यूथ का माइंड करप्ट होता है ना, ये जहन पे रख लें चीज कि ये जो इनकलाब आते हैं ना पूरी दुनिया में, वो यूथ लेकर आता है. इंडीड. ठीक है. नॉर्मली 18 से 25 साल का यूथ होता है, 16 से 25 साल, देयर आर डिफरेंट एजेस. वो यूथ इनकलाब लेकर आता है, वो तब्दीली लेकर आता है, उस मुल्क की माहौल को चेंज करता है. जब ये यूथ करप्ट हो जाता है ना, वो माहौल उस मुल्क का बिल्कुल ही खराब हो जाता है. उनमें जीने की तमन्ना नहीं रहती उस मुल्क में. मतलब यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू नाउ, यू नो, बिकॉज़ यू आर सो मच इनटू दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी. घेरे लग जाते हैं पूरे. एक जर्मन फिलोसोफर है एडोनो, ये 1908 में गुजरा है. उस वक्त के दौर में इसने एक बात कही थी कि ये जो मूवीज होती हैं, रेडियो चैनल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, 1908 में आपसे बाद में एक बुक था उसका, बुक वाज ऑन एक्चुअली द
इंडस्ट्री कल्चर या कल्चर ऑफ इंडस्ट्री, इस तरीके के उसने डिस्कशन की थी। तो उसमें कहा था कि ये जो है ना यूथ को कंसंट्रेट और एक जगह पे रोकने के लिए चीजें होती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप अभी भी डिक्शनरी पे सर्च करेंगे, दैट इज ब्रेड एंड सर्कसेस। सही, ठीक है। ब्रेड एंड सर्कसेस जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप पुराने ग्रीक दौर में चले जाए ना, उसमें क्या होता था कि वहां पर एक ग्रीक या रोमन दौर में, तो वहां पर ये ग्लेडिएटर्स होते थे और अवाम को उन फाइट्स में इन्वॉल्व किया जाता था, सो दैट दे शुड फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग टू देम। सो दे फॉरगेट अबाउट द ब्रेड, they forget about the basic needs. They just enjoy the circus, you know. So we are part of that thing right now, okay? हम वो बेसिक चीजें जिन पे हमें बोलना चाहिए, we forget about these things because we do not have any identity. We don't know about anything about ourselves. हमने अपने आप को उस तरीके पे, उस तहज पे लेकर ही नहीं आए. So that is something troublesome. I suggest my youngsters के please अपनी आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं और हर एरी गेरी आइडेंटिटी को अपने ऊपर ना ले आए, ठीक है। और जो आप एरी गेरी आइडेंटिटी लेकर आते हैं, दैट्स अ फेक आइडेंटिटी। बिल्कुल, दैट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स इट, दैट्स नॉट द रियल आइडेंटिटी। अगर आप उनमें, आई हैव बीन इन आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो पर्सनली कि उनकी रियल लाइफ कैसे गुजरती है, जिनको आप यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। सो देयर लाइफ इज नॉट लाइक एज यू थिंक, दैट्स टोटली डिफरेंट। थैंक यू। यस, इसी पे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया ना कि कर खुदी को इतना बुलंद कि बंदा खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा कुछ तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। So it's all about the खुदी, it's about yourself and identity. You have to increase it. Yes. So इसी के साथ इस प्रोग्राम से हम चाहेंगे इजाजत और इंशाल्लाह सर के साथ हमारी कमिटमेंट हो चुकी है, तो हम सेल्फ आइडेंटिटी और